Hello, everyone, and welcome to today's Hindu editorial analysis brought to you by Unacademy, and I am Vaishnavi, presenter. Um, I hope you can see and hear me, everyone. Mm, I unveil the blueprint of my house because house is the linchpin of our family, and the labors are working with expeditions working expeditiously. We have a stew of balu, and this time house is in good status quo. Very nice, Ashok. Good job. Hi, Hivan. Good job, Ashok. Good afternoon. Hivan, hi. Salutations to you too. Bhavya, hi. Good afternoon. Vedika, good afternoon. Alpesh, good afternoon. Sharva, good afternoon. Chandan, hello, hello, good afternoon. Sriranga, good afternoon. Ria, hello, hello, Ria. And Ishani, good afternoon. Laiba, hello, nice to see you here. Ankita, hello. Kinkini, hello, good afternoon. Nice to see all of you here. Um, Gaurav, good afternoon. Linchpin of my heart. Oh, good afternoon, Gaurav. Jai Shri Ram. Um, अभी मुझे गुरुराज Gur Gujjar. Sorry, Gujjar. Oh my God, DS. Okay, let's keep it DS. Okay, Jai Shri Ram DS. Mr. Sahil, good afternoon. I am doing fantastic, Alpesh. Thank you for asking. I hope you are doing well as well. Anmesh, hi, good afternoon. John Doe, good afternoon. New day today of the month. Ola Uber. Okay. All right, so let's get started with today. आज हमारा जो editorial है, that is not going to be a very डिफिकल्ट वन. बहुत आसान सा एडिटोरियल है और वर्ड्स वोकैबुलरी भी बहुत आसान आसान से हैं. सो आई एम होपिंग दैट टुडे वी विल बी वाइंडिंग इट अप क्विकली. लेकिन अगर नहीं भी होगा तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ईशानी, हाँ पूछो, प्लीज टू आस्क. वेदिका, I am always this happy to see all of you. Okay, not that I'm always this happy. Um, but when I see all of you, I'm really, really happy. Ishani, yes, please do ask your question before we get started. Till then, I will do this zoom in, zoom out thing. Yeah, done. Kirti, hi, lovely to see you, Kirti. Good afternoon, Kirti. Okay, so this is my Telegram channel and this is me. If you have not subscribed to my channel yet, do subscribe to it because June aa gaya hai and we are going to have a fantastic month with lots to do this month. So इसीलिए make sure कि आप मेरे channel पे को subscribe कर ले रहे हैं ताकि you know what is happening in English language section and what are we doing, क्योंकि हम एक idiomatic expression करते हैं, एक phrasal verb करते हैं, and this month we are going to add another set of things. Another panga, baby, calm down. Okay, so another set of things that we are going to add for the month of June. Okay, so stay tuned and make sure that you are subscribing. अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है टाइप करने से unacademy_vaishnavi_clat, then you can simply scan the QR code and it will take you straight to my channel. All right, so
बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ, वोकैबुलरी की तरफ. सो वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज, ओनली वी हैव टू रीड इट, मैम. Ishani, before coming to the class, you just have to skim through the passage. Huh? You just have to read. You don't have to understand. Okay? Madam, what is the difference between idiom and phrases? Okay. Very nice question, Bhavya. I would like to clarify that. Now, the difference between idiomatic expression and phrases is, if we consider phrases, this is phrases. Phrases are just a group of words, ठीक है? Group of words that are always used in the same manner and have an independent meaning of their own. लेकिन stand alone एक sentence नहीं बना पाते, okay? They have certain meaning of their own and they are always used in the same way. Verb का form change हो सकता है, लेकिन they are always used in the same manner, okay? So when you say simple things like sit down, okay? Sit down. Okay, or when you say I broke up with my boyfriend or girlfriend, so broke up, all these are phrases. Okay, now idioms kya hote hain? Idioms are part of phrases. Basically idioms are also phrases, but they have a figurative meaning. मतलब फिगरेटिव मीनिंग होता है, मतलब क्या होता है इसका कि उनका जैसा वो लिखा हुआ होता है उसी सेंस में उसका मीनिंग नहीं होता है. ओके, यू कैन नॉट टेक इट एज इट इज रिटन. मतलब लिटरली आप नहीं लेते हो इडियम्स को. ये भी फ्रेजेस होते हैं, लेकिन इन फ्रेजेस को आप लिटरली नहीं लेते हो. इन द सेंस दे हैव अनदर मीनिंग ऑल टुगेदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से लेट्स पेंट द टाउन रेड. ओके, सो लेट्स पेंट द टाउन रेड. आई एम नॉट सेइंग, मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं लिटरली बोल रही हूँ कि हम बकेट्स ऑफ पेंट लेते हैं और हम जाके पूरा टाउन को रेड पेंट से कवर कर देते हैं. दैट इज नॉट द मीनिंग. इट मीन्स लेट्स गो एंड हैव अ गुड टाइम. ओके, सो इट मीन्स कंप्लीटली एंड एंटायरली डिफरेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम फिगरेटिव मीनिंग होता है इसका. तो जब तक आप इसका फिगरेटिव मीनिंग नहीं जानते हो, तब तक आप नहीं सेंस बना सकते हो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के, राइट? सो you need to understand the figurative meaning of the sentence, of the group of words. Okay, so all phrases, all idioms if you see are phrases, but all phrases are not idioms. Okay, let that sink in. Okay, all idioms are phrases, but all phrases are not idioms. I hope that is clear. I don't have offline paper. I have subscription of English newspaper in e-paper mode only. Me too, Truranga, me too. Okay. All right. Bhavya, I hope that is clear. Like bread and butter. Yes, absolutely, Ashok. New to this class. Hello, Ankita. I welcome you to the session. 30 people today. Yeah, Alpesh. Yeah. Which channel, Alpesh? Okay. So let's get started with the vocabulary today. These are the words, very, very simple words, something that are very essential words, जिसका meaning जानना बहुत ऑब्वियस हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसे वर्ड्स के हम बारे में डिस्कस करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स यू मस्ट हैव सीन इट, लेकिन मीनिंग भले ही नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होगा यूजेज कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल साइक्लिकल. साइक्लिकल इज समथिंग जो एक साइकिल की तरह करता है, मतलब वापस से वो चीज होता है. ठीक है, सो लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो when we say life cycle of a butterfly, every butterfly will have to go through the cyclical process of its life. Okay, so cyclical process can be anything that happens always. Okay, ये होता है, उसके बाद फिर वो होता है, उसके बाद फिर वापस से ये हो जाता है. So basically it's a like a 360-degree thing. Okay, so वापस से अकर करता है, recurrent होता है, मतलब वापस से रेकर करता है. ओके, एज इन होता है, कोई चीज वापस से होते रहता है. That is called cyclical. Okay, so cyclical periods or menstruation are cyclical process. Okay, so cyclical can be anything that is occurring in cycles. Okay, and periods or menstruation being the best example of it, है ना?
नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिमिनिश, मेक और बिकम लेस. सो डिमिनिशिंग अमाउंट, डिमिनिशिंग वैल्यू, डिमिनिशिंग एस्थेटिक्स. ओके, सो मतलब किसी चीज को जैसे जैसे वो कम होते जाता है, उसका वैल्यू कम होते जाता है या वो कम होते जाता है. ओके, तो दैट इज टू डिमिनिश. ओके, वर्ब फॉर्म है तो डिमिनिश्ड. ओके, or diminishing or diminishes. Okay, so you can use it in any of these forms. Okay, so make or become less is the meaning of diminish. अब नेक्स्ट वर्ड भी एक कॉमन वर्ड है, रिटेन. ओके, रिटेनिंग कैपेसिटी, हमने ये वर्ड पहले भी किया है. ओके, वी हैव डन दिस वर्ड बिफोर. ऑलराइट, सो रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन इज टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, कीप इन पोजेशन ऑफ. ओके, सो रिटेन करना किसी चीज को इज टू कीप समथिंग, है ना, मतलब उसको रख लेना. ओके, रिटेन कर लेना मतलब रख लेना. ओके, सो रिटेन एन एम्प्लॉय, रिटेन द अमाउंट. ओके, और यू कैन से रिटेन retain the idea. Okay, so मतलब उसको आप रख रहे हो. Okay, so you keep in possession of. Okay, so you keep something in possession of something is to retain something या continue to have something. कोई भी चीज अगर आपके पास रह रही है तो you are retaining it. Okay, and English में भी reading comprehension में you check your retaining capacity. Okay, retaining capacity. Okay, सो रिटेन ओवर हियर इज अगेन वर्ब, जिसका मतलब आप इसको रिटेन्ड कर सकते हैं, रिटेनिंग कर सकते हैं और रिटेन्स कर सकते हैं. ओके, the next word that we have is bountiful. Now this is something, bounty आपने देखा होगा कि किसी के सर पे bounty रहता है. Okay, so bounty रहता है मतलब a certain amount is on their head. Okay, on their head as in on them. Okay, so bounty से आया है बाउंटीफुल. फुल जब भी आता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है. ओके, सो बाउंटीफुल इज अ लार्ज समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी. कोई भी चीज बहुत बड़े क्वांटिटी में होती है या अबंडेंस होती है कोई चीज की, तो दैट इज कॉल्ड बाउंटीफुल. और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्लेंटीफुल हो सकता है, एम्पल हो सकता है. ओके, सो बाउंटीफुल अमाउंट ऑफ समथिंग और एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग और प्लेंटीफुल समथिंग. ओके, बाउंटीफुल समथिंग, प्लेंटीफुल समथिंग, एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग. ओके, इसका ऑपोजिट क्या होगा? मीगर. ओके, मीगर अमाउंट ऑफ समथिंग. मीगर अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट का. ओके, सो दैट विल बी द ऑपोजिट ऑफ बाउंटीफुल. ओके, सो मीगर वुड बी द ऑपोजिट ऑफ बाउंटीफुल. ओके, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा प्लेंटीफुल और एम्पल. ओके, ओके, देन वी हैव ड्राई स्पेल. ओके, ड्राई स्पेल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वेदर कंडीशंस के लिए. जब ऐसा पीरियड आता है जहां पर कोई बारिश नहीं हो रही है, वो पीरियड को कहते हैं ड्राई स्पेल. ओके, सो पीरियड वेयर देयर इज वेरी लेस, मीगर अमाउंट ऑफ रेनफॉल या ऑलमोस्ट no rainfall, that period is called a dry spell. Okay, dry spell is the period of no rainfall. Okay, a period of dry weather मतलब कोई rainfall नहीं हो रहा है, बहुत dry है weather. Okay, this is also an important word. ये compound noun है, dry spell. Okay, incessant. Incessant is the next word. Incessant भी हमने पहले किया है. Okay, incessant is something that never stops. Okay, incessantly something is happening मतलब बार बार और बिना रुके हुए हो रहा है. Okay, हो जा रहा है, हो जा रहा है. So especially in an annoying or unpleasant way. Okay, कोई चीज जो रुकती नहीं है और बहुत annoy करती है. So the incessant loud music. Okay, so incessant मतलब something that continues. Okay, मतलब बिना रुके चलती जाती है, चलती जाती है. सो ऑपोजिट होगा इंटरमिटेंट. ओके, इंटरमिटेंट वुड बी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लोग, सो इंटरमिटेंट वुड बी द ऑपोजिट ऑफ इंसेसेंट. ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. It's not fair to diminish it. Okay, all right. Moving on to the next one, downpour. जैसे dry spell होता है, उसका opposite क्या हो जाएगा? Downpour. Okay, dry spell is a period of no rainfall. और downpour होता है जब heavy rainfall होता है. Okay, a heavy fall of rain is called a downpour of rain. Okay, so so we are expecting a downpour this month. Okay, or in the month of July, we are expecting a downpour in the month of July. मतलब we are expecting heavy rainfall in the month of July. All right.
So downpour is the next word. Then we have peculiarity. Okay, peculiarity, peculiar कोई चीज होता है तो मतलब वो odd होता है, unusual होता है, ठीक है. Peculiar कोई चीज होता है तो that is odd or uh, uh, different, okay, unusual. Okay, so the quality of being strange or unusual. Okay, so something that is strange या ऐसा generally नहीं होता है, this is something that is peculiar, or this incident or behavior was peculiar today. Okay, मतलब odd था, unusual था, जैसा daily होता है वैसा नहीं था. Okay, so strange or unusual, or an unusual characteristics or habit. Okay, कोई भी unusual characteristic or habit होता है उसको हम peculiar बोलते हैं. Okay, so he has a peculiar habit of scratching his head too much when he gets angry. Okay, he has a peculiar habit of scratching his head too much when he gets angry. Okay, or when he gets furious. Okay, so a person having a strange quality. Okay, or a thing that is strange. Okay, तो कोई भी चीज strange या unusual होती है habit में या characteristic में तो उसको peculiarity कहते हैं. और peculiar is the other form. Okay, peculiar behavior. Okay, so adjective इसका क्या हो गया, peculiar हो गया, and peculiarity हो गया इसका noun form. Okay, so his peculiarity got him the job. Okay, his peculiarity got him the job. Okay, so his oddness or oddity got him the job. Okay, spatially. Okay, spatial. Okay, space से आता है spatial. Okay, spatial क्या मतलब होता है, in a way that relates to space and the position or area and size of things within it. Okay, so spatially placed. Okay, the cupcakes were spatially placed. मतलब spatially placed मतलब थोड़े थोड़े gap के बाद placed थे. Okay, in a certain space, after a certain space or certain gap. Okay, so spatially is the adverb form naturally क्योंकि ly आ रहा है, right? So ly is the adverb form. So spatially is the adverb form. Okay, the last word that we have is deficit. ये इकोनॉमिक्स वाले passages में बहुत ज्यादा यूज होता है ये और diminish. Okay, deficit and diminish are something that you will see mostly happens in ये words और terminologies किस में यूज होता है, finance से related passage होगा या मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेटेड या मॉनेटरी एंड फाइनेंस से रिलेटेड पैसेजेस होगा या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री से रिलेटेड पैसेज होगा तो उसमें आप ज्यादा देखोगे वर्ड्स लाइक diminish and deficit. Okay, so deficit is the amount of by which something, especially a sum of money, is too small. Okay, कोई चीज कम होती है. Okay, तो there is a deficit of something. Okay, कोई चीज की कमी होती है तो there is a deficit of something. Okay, so deficit of money, deficit of food, or a deficit of basic standard of living. Okay, or basic necessities. Okay, that is deficit. So हमने कौन कौन से word किए, cyclical, diminish, retain, bountiful, dry spell, incessant, downpour, peculiarity, spatially, deficit. All right, now let's look at the sentences. Yes, Laiba, I know you are also there for today's class. I'm really, really happy. I am I am paying a little amount, a small amount. Little नहीं use करते हैं हम amount के साथ, small use करते हैं. Okay, because countable and uncountable चीज हो जाता है. Little is always used for uncountable, right? So small amount you will use. Truranga, I am paying a small amount like 35 rupees for 6 months. It's a Telegram group. Very nice, Truranga. You conveyed the message. Okay, Hindu paper channel. All right. Okay. Truranga Bhai. Okay. Studying is a cyclical process. Very nice, Bhavya. Very nice. Very nice. Alpesh, villain entries in Gotham are cyclical and they are one of a kind too. Yes, Alpesh, absolutely. They are all very weird in a very different way and dark in a very different way. Very nice. Alpesh, crime rate has diminished since Bruce Wayne has been sneaking in the dark alleys. Very nice, Alpesh. Good job. Amazing, amazing.
Uh, Bhavya, she borrowed my pen for a class and then she retained it. Yes, very nice, Bhavya. Good job. Kirti, my mother thinks a beauty is diminishing slowly. Very nice, Kirti. Good job. Ashok, I revise, not revision. I revise my notes cyclically. Okay, cyclically हो जाएगा. Adverb यूज होता है. End में क्या हो जाता है? ly यूज हो जाता है, तो वो adverb form हो जाता है. ठीक है. So Ashok, I revise my notes cyclically. Okay. Ria, I'm slowly retaining my habit to study for 6 to 7 hours. Very nice, Ria. Good job. Proud of you. Truranga, after studying the serial killer's murder, a cyclic and repeating pattern was discovered by the detective. Well, that's our job. Very nice, Truranga. Good job. What a exceptionally beautiful sentence. I love this. Very nice, Truranga. Gotham retains its peace, all thanks to the Batman. Yes, Alpesh, good job, good job. Sharva, my vision started to diminish as soon as she started breaking promises. Very nice, Sharva, good job. Bounty hunter तो बहुत अलग है इससे. नहीं, नो. बाउंटी हंटर से अलग नहीं है. ओके, बाउंटी का मतलब वही होता है. ओके, अ प्राइस. ओके, अ प्राइस on someone's head. Okay, so price is like a huge amount of something, a huge amount of money. Okay, is called a bounty. Okay, a large amount of money, a large sum of money is called a bounty. तो किसी के सर पे bounty होता है and the bounty hunters are looking for they are killing or catching the people जिनके सर पे bounty है to get the bounty, right? So they are not very different. Okay, Alpesh, a dark warrior is needed when the city is plunged. Wow, plunged into bountiful criminal activities. Very nice, Alpesh. Good job. Bhavya, I have a bountiful of cricket bats. I have a bountiful. अलग अलग नहीं करना है भव्या इसको. Same word होगा और FUL हो जाएगा in that case. Real life and death is cyclical. You can't control it how much you want it to. How much ever you want to. Okay, how much ever you want to or wish to. Very nice, Ria. Alpesh, after detonation of nuke, the city faced a dry spell, making it impossible to rehabilitate. Very nice, Alpesh. Good job. Swordsmiths kept forging sword incessantly. Very nice, Sharva. Very nice. It's not fair to diminish her efforts. She's worked very hard only for me to to make me happy. Definitely, mama. She's my wife material. she's wife material. Very nice, Triranga. Good job. Aditya, the price of Yonex badminton racket increased diminishingly. Increased diminishingly opposite हो गया. ये तो oxymoron हो गया आदित्य जो आपने sentence बनाया. Increased भी लिख रहे हो आप और diminishing भी लिख रहे हो. Okay, so this is an oxymoron, okay, and it does not make a lot of sense. कुछ कुछ oxymorons make sense, but this one does not, okay, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हो आप increase, तो increase मतलब ऊपर, diminish मतलब नीचे. So how can it increase diminishingly, right? So it should be decrease diminishingly, okay, or diminished. Okay, Hivan, I got a bounty of $1 million on my head, but whoever catches me, I guarantee they are not making alive. They are not making it alive. Okay, very nice, Hivan. Good job. Summer is a dry spell. Bhavya, as simple as that. Good job. Gotham is prone to incessant criminal robberies and criminal killings. Very nice, Alpesh. I love the sentences that you have been making since yesterday. Let me tell you that. Awesome. Ishani, ma'am, can you use incessant in a positive tone? Uh, you can. You can when you are using it for incessant beating of heart. Okay, so you can use it in a positive way. Okay, so the incessant beating of heart. Okay, so you can use it. Okay. Ishani, Kirti, I retained the beautiful quotes always I have ever heard. I retained
all the beautiful quotes that I've ever heard. Okay, very nice, Kirti. Good job. He was sneezing incessantly. Yes, Bhavya. Generally, people who suffer from sinusitis, they sneeze incessantly. Yes, absolutely correct. Ashok, downpour is the antonym of dry spell. Yes, yes. Ria, it becomes incessant when someone doesn't stop talking, even though you are not interested in listening to them. Yes, Ria, absolutely. It becomes incessantly annoying. Okay, so you can use it in that way as well. Turanga, it is difficult to retain top management. Haha, but not for me, kid. I'm the bull of this management. Don't worry. Very nice, Turanga. Good job. Moss and Ram. Recorded downpour last week. Mawson Ram recorded a downpour last week. Very nice, Sharva. They said there will be a downpour. So Bruce Wayne made a waterproof suit for his mission. Very nice, Alpesh. Good job. My God. I wouldn't have made such wonderful and fantastic sentences. Proud of you. Ishant, hello leader. Sorry for being late. I just came after giving my college exams. I hope it went well, Ishant. And welcome. Kirti, the downpour in Cherrapunji becomes incessant many times. Very nice, Kirti. Yes, Cherrapunji and in Gangtok as well. Very nice. Triranga, we found a bountiful supply of coconuts on the island. So Alpesh and Ishant, ab paisa hi paisa hoga. Triranga, good job. Aditya, more like Forrest Gump wala condition hoga. Not Forrest Gump, sorry. What was the name of that movie? Very nice movie. Lost. No, what was that? Can anyone remind me of the movie? It was such a beautiful movie. Forgot. Where he gets stranded or marooned on an island and he talks to this football call and he names it Willie, I think, Willie. Okay, Aditya, my ex had a peculiar habit of insulting me, so I never retained her in my life. Very nice, Aditya. Good job. Uh, Whenever Bruce comes, not much, Ishant, you haven't missed out on much. These are the words, the first set of words we are doing. Whenever Bruce comes around bats, he reacts peculiarly due to his past horror memories. Very nice, Alpesh. So he has overcome it. That's why he reacts peculiarly. Very nice. Vedika, we have good news that the fiscal deficit of India has been reduced by 5% from 6.9 of GDP to 6.4 of GDP. Very nice, Vedika. Good job. Dry spell and downpour both are the worst period for farmers. Very nice, Jiha. Good job. A good lawyer should have power to retain the case quickly. Very nice, Vedika. Good job, Sharva. Animal possesses Animals possess spatial awareness to keep themselves out of danger. Sharva, kya sentence hai? Beautiful, very nice. Alpesh, there is a deficit of policemen since police killer is on the run in Gotham. Very nice, Alpesh. Good job. Hivan, union leaders have called upon the government to help retain workers. Very nice, Hivan. Good job. My CLAT preparation is going on in a cyclical manner. Very nice, Vedika. Sakshi, he hurt me in an incessant way. Sakshi, go ahead and kill him. Okay. Truranga, I have 2 or 3 word answers to that reporter's incessant question. I know how to avoid those LLB. LLB किया है कोई मजाक थोड़ी है. Nice, Truranga. Good job. We got soaked in a sudden downpour. Very nice, Lucky. Simple as that. Rajasthan's downpour was a little peculiar as it has been a dry spell since ages. Wow, Palak. Nice. Absolutely amazing. Ria, her marks are beautiful, but whenever someone asks something, her knowledge diminishes within a minute. Good job, Ria. Ishani, we should retain our consistency. Very nice, Ishani. Good job. Laiba, Sam is a great salesman, though lately he's been having a bit of a dry spell. Very nice, Laiba. Good job.
Ishant, on my own birthday, I was given a deficit since slice of cake. How mean of all of you. Very nice, Ishant. Good job. Peculiarity always stands out. Very nice, Kinkini. As simple as that. Beautiful. Aditya, I have a bountiful of guns. Okay, gun collection. Okay, then it is fine. I have a bountiful of gun collection in a Vedic game. Very nice, Aditya. Good job. Palak, she retained her position and continued the cyclic hierarchy of Siren era. Very nice, Palak. Very nice. Bhavya, he donated a deficit amount for the orphanage, to the orphanage. Very nice, Bhavya. Ashok, if I destroy the food and then food diminish, if I destroy the source of food, okay, or if I destroy the source of food, then the food will diminish, okay. Ashok, good job. Happiness and sadness are cyclical in everyone's life. Yes, Sakshi, beautiful. We will reduce the federal budget deficit. Very nice, Laiba. Simple as that. Akshay, can we move to the editorial analysis? Akshay, not yet. Vedika, we should diminish the use of fossil fuels. Very nice, Vedika. Okay. Akshay, have some patience in life, Akshay. Have some patience in life. It pays off really well. Kirti, my life got full of dry spell when I commented to my mother's age. My life, my life, um, got got a complete dry spell. Okay, got a full dry spell when I commented on my mother's age. Very nice, Kirti. Good job. Lucky she had trouble retaining her optimism after the zombie attack began. Yes, Lucky. Good job. Ishant, Lencho is writing a letter to God because all his crops were wasted due to a downpour of rain. Very nice, Ishan. Good job. Good job. Palak, his bountiful words of incessant promises made my faith diminish from him. Very nice, Palak. Bhavya. Ma'am, my name is Bhavya. Bhavya. Oh, Bhavya. Okay, it is Bhavya. Oh, you are a boy. Bhavya. Sorry, Bhavya. I will keep that in mind. I'm lucky to have a bountiful of blessings. Very nice, Vedika. Good job. Triranga, you make very positive sentences, Vedika. I like it. Triranga, for the past 6 hours, the downpour had been continuous, and it's a nice climate for clan, candlelit dinner. Very nice, Triranga. Good job. So someone's in a mood. Ashok, my Anga, younger brother incessantly annoys me. Okay, Ashok? I also Google vocab while watching web series. Very nice, Alpesh. Okay, Chandan, I am bountiful interested in cricket. I have a bountiful interest in cricket. Ishani, particular area is experiencing a dry spell for a long time. Very nice, Ishani. Hiwan, you are running a deficit if you spend more money than you make. Very nice, Hiwan. Good job. I did not retain my knowledge. Ashok, good job. Negative, but good job. Vedika, the heavy downfall made the farmers disappointed because all their hard work got ruined. Very nice, Vedika. Kinkini, never stop being incessant when it comes to your goals. Very nice, Kinkini. Very nice. Good job. Kirti, facing awkward situation is a cyclical process of my life. Well, that's my life. Very nice, Kirti. Good job. Pick a code. Females got deficit amount of salary compared to males. Very nice, pick a code. Good job. Sriranga, uncomfortable laughter from the audience was a direct result from the peculiarity of my words. That's why now I am an international stand-up comedian. If you want to take an interview with me, let's do it. Sriranga, good job. My smile is my peculiarity. Very nice, Ashok. Finally, good job.
The dry spell brought moribund to people of Rajasthan. Very nice, Vedika. I just commented that you always make positive sentences, but it's nice. Manisha, seasonal rhythms are generally much more regular than cyclic rhythms, and so uh, can be measured and forecasted more accurately. Okay, कोई forecasted होता है? I don't think so. I'm not sure, Manisha, but I don't think forecasted होता है. Measured and forecast more accurately. Okay, I think so. Let me just, I will check and get back, but I think it should be just forecasted. Okay, let me see. Sanjana, nowadays there is a dry spell all over Northeast, and we are in demand of downpour. Very nice, Sanjana. Good job, brilliant. Diminish the revenue by reducing tax. Very nice, Manisha. My neighbors are shouting in the middle of the night to shut down that music player, but I am incessant in playing Slim Shady. I'm Slim Shady. Very nice, Ishant. Manisha, you must retain your school reports. Manisha, good job. Kirti, I felt peculiarity in my sister's behavior when she said, "You are looking good today, sis." So, yes, that is something peculiar. Yes, Kirti, absolutely good. Very nice, brilliant. Vedika, incessant economic crisis of Pakistan led to the death of many people. Vedika, you are just going on with the negatives now. Okay, very nice. Good job. Castaway. Yes, Castaway. Hivan, good job. The name of the movie was Castaway. Beautiful movie. If you have not watched it, you should watch it. What a lovely movie. Manisha, I do not believe that nature is limitlessly bountiful. Very nice, Manisha. Good job. Aditya, some friends of mine are bullying me incessantly. I will settle the scores with them by clearing the CLAT exam. Right, Aditya, good job. CLAT exam, me? CLAT exam. You have to clear. Yes, Aditya. How bountiful life is. Oh, how bountiful life is. Very nice, Manisha. Yes, it is. Chandan, I have a peculiar habit of incessantly annoying my siblings, okay? Or peculiar habit of being incessant with my siblings. Um, the threat of nuclear war has diminished. Very nice, Laiba. The villagers think this year crop will be bountiful. Very nice, Laiba. Kinkini, we are loving this incessant downpour of words. Very nice, Kinkini. Good job. I am not loving this incessant making of sentences, but I have to. I mean, I'm loving it, obviously, but time, everyone. Manisha, 2 weeks without rain gave the region its longest dry spell of record. Very nice. Manisha, beautiful sentences you make. Vedika, Pakistan leader seems to be very peculiar sometimes. Very nice, Vedika. Triranga, Mondal has excellent spatial awareness of objects in her proximity. If you don't know who she is, go and search that song, Teri Meri Ranu Mondal. No idea. Tiranga, I will search. But good job. Alpesh, the engineer from Wayne Industries developed a special suit for Bruce to be quiet and precise in adverse condition. Very nice, Alpesh. Good job. Manisha, outside the window is the incessant noise of cars and buses. Very nice, Manisha. Good job. एयरलाइंस वो डेफिसिट मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना ओके डेफिसिट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग ठीक है कोई चीज का छोटा अमाउंट बहुत कम अमाउंट ओके या एयरलाइंस वुड प्रेफर टू अपडेट रादर रिटेन क्रूज वेरी नाइस वन सिद्धार्थ रांझा के लिए हीर और मजनू के लिए लैला भी होनी चाहिए और मैम मेकअप से कुछ नहीं होता शक्ल भी होनी चाहिए वाह वाह सिद्धार्थ वाह एब्सोल्युटली करेक्ट
कुछ नहीं होता है कैसे, बहुत कुछ होता है मेकअप से. Siddharth, I think you need to sit down for a makeup session and you will see your confidence blooming. Ishani, life goes in a cyclical manner. Some days are good and some are bad. So don't worry, go ahead. Very nice, Ishani. Good job. Hawa Mahal was specially designed to, very nice, Ishant, to allow the breeze to flow through. Very nice. Very nice, Ishant. Manisha, I dislike the heavy rain, heavy downpour very much. Very nice, Manisha. Um, आसमान में काली बादल छाई है. I want to read what Siddharth has to say. फिर घर वाली से मार खाई है. मन तो करता है कि सुधर जाऊं, पर क्या करूं, काम वाली आज फिर भीग कर आई है. Yuck, Siddharth, you are disgusting. I need to block you, Siddharth. I'm sorry. Ugh, how do I block this? Yes. Siddharth, bye bye. Okay. Uh, Thank you. You are great teacher. Yes, thank you. Dry spell and downpour both are opposite of each other. Yes, Chandan. Yes, absolutely correct. Some peculiarity might now dart forth. Very nice, Manisha. If I get one of the best NLUs, it will be like a downpour in a dry spell. Kirti, there is a very nice Ria. There is a deficit in good boys nowadays. कोई मिलता ही नहीं है. Kirti, yes, absolutely correct. It was always there, Kirti. It's not nowadays, it was always there. There's a deficit. Chandan, I cyclically watch Tarak Mehta old episodes. Very nice, Chandan. Good job. I'm very strict towards my book spatial. Ria did not make a lot of sense. I'm very particular, or I'm very particular about the spatial arrangement of my books. Okay. Ishant, that nigga would prefer to become stoned to retain the love of Medusa. No, the N word, not. I was well aware of peculiarity of my own situation, jiha, because of downpour of zombies. We were unable to listen to the sound of footsteps. It was easy to escape. It was not easy to escape. Very nice, Jiha. Good job. The deficit zombies walk the streets of our town. Deficit zombies. Lucky, क्या कर दिया आपने? The noise was incessant throughout the night. Very nice, Laiba. Slim Shady, that's what I'm talking about, Eminem. Yes. There's a bountiful of anxiety in my life, but when I chant Krishna, I feel very calm. Very nice, Akshi. Less marks and mock diminish my motivation. Very nice, Chandan. Good job. Okay, Mehak has also made sentences. The cyclical order of my life is diminishing day by day. I must retain it as I have a bountiful of tasks to do. The life has become a dry spell, and I'm waiting for a downpour to end the sad era. A downpour, the sad era is incessant. To end the sad down to end the downpour of sad era is incessant. Okay, very nice, Mehak. एक ही बार में आपने सल्टा दिया. Very nice. Gorka, hi. Peculiarity is like being introvert, enjoying our own low-key vibes. The more boring life you have, the more people you are interesting in you. You are no more people are interested in you. Very nice, Jiha. Mm. Newborns often feel the weight of the world's sadness on their shoulder. A bountiful dose of love can lighten their burden. Very nice, Ishant. Oh my God. Very nice. She went to Unfamous again after one song, bro. Okay. All right.
if you're not able to find a good boy, then there might be a dry spell of mind in your brain. Very nice. All right. Okay. Fortnightly. Okay. Fortnightly matlab, what is fortnightly? Something that fortnightly is 14 days. Okay. 14 nights mostly. Okay. 14 nights, not days, nights. Okay, so something that happens or is produced every 2 weeks, हर 2 week में जो आता है, that is called fortnightly. Okay, it can be used as an adjective as well as an adverb. Okay, so the fortnightly appearance of the villain. Okay, and the villain appeared fortnightly. Okay, so here the fortnightly appearance of villain made the hero anxious. Or you can say the villain appeared fortnightly. Okay, so in the first sense we are using it as an adjective, in the second sense we are using it as an adverb. Okay. ओके, प्रोग्नोसिस भी हमने पहले कर लिया है. प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज जज्ड लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, स्पेशली इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो बेसिकली एक कोई भी करंट सिचुएशन के को देख के हम ये देखते हैं कि उसका फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या होगा. ओके, व्हाट विल बी द, व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में उसको वो कैसे होगा. ओके, व्हाट विल हैपन टू इट इन द फ्यूचर. अगर आप कोई चीज को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन कि अभी क्या हालात है, उसके बेसिस पे उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो दैट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ सर्टेन थिंग. ओके, प्रोग्नोसिस. Diagnosis and prognosis. Prognosis is also used in medical terms as well, where the doctor tells you कि आपको ये कैसे कैसे मेडिसिन लेने हैं. ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू टेक द मेडिसिन, व्हाट यू हैव टू डू टू गेट बेटर और गेट हेल्दी अगेन, और गेट कॉन्वेलेसेंट अगेन. तो प्रोग्नोसिस एंड दैट इज डन आफ्टर द डायग्नोसिस. ठीक है, डायग्नोसिस के बाद प्रोग्नोसिस होता है. ओके, इन मेडिकल फील्ड. और प्रोग्नोसिस इन जनरल अगर हम बोल रहे हैं तो हम फ्यूचर एंटिसिपेट करें कि फ्यूचर कैसा होगा. ठीक है, इसका फ्यूचर कैसा दिखेगा, ये कैसा होगा. Okay, is prognosis. Next is dynamic. Okay, now dynamic can be used for a person as well. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे देख रहे हैं, प्रोसेस और सिस्टम के लिए देख रहे हैं. तो कोई भी चीज, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस और सिस्टम, प्रोसेस या सिस्टम जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है. ओके, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्टिविटीज होती है, या प्रोग्रेस उसका कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है. प्रोग्रेस रिपोर्ट उसका मतलब बेसिकली एवर चेंजिंग चीज जो होती है. ओके, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, चीजें चेंज होते रहती है उसके अंदर, इज समथिंग दैट इज डायनामिक. ओके, इट कैन गो इन अ लॉट ऑफ वेज. अगर कोई चीज बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है तो दैट इज डायनामिक. ओके, एंड अ पर्सन हु इज डायनामिक इज अ पर्सन who is able to mold himself to any different kind of situation. Okay, so dynamic can be talented people, can be called dynamic. Okay, or people who can do a lot of things. Okay, who are good at a lot of things are called dynamic. Okay, so dynamic people and dynamic process or system. Okay, दोनों के लिए हम use कर सकते हैं. Now the last word is tad bit easy. Okay, so tad हम किस लिए use करते हैं, small extent के लिए, somewhat. Okay, so tad is just a small amount. Okay, so I'm a tad sad. Okay, tad sad. Okay, so I'm a tad sad, or um I am sad just a tad. Okay, just a tad. Wow, I'm sad just a tad. Okay, so tad is a small amount of something, a little bit. A little bit, no, 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 a little bit. Procrastination comes to me after every fortnight. Procrastination comes to me every fortnight. Okay, or procrastination comes to me fortnightly. Very nice, Ushani. My mock scores are my mock score is dynamic. Very nice. The fortnightly homework checking led to my medical leave excuse. Very nice. Good job. Are you talking about killing Bruce Wayne? You can't even beat his butler, even if even if given a fortnight for it. Even um, if given a fortnight for it. Very nice, Alpesh. Good job. There is a fortnightly party tonight. Very nice, Manisha. Simple as that. A fortnight
14 days or 14 days may not seem like a very long time, but it gives you time to prepare. Read well and paper फाड़ एग्जाम देना फाड़ के एग्जाम देना. ओके, वेरी नाइस. हिंदी भी करेक्ट कर रही हूँ मैं. I'm going to meet my brother after a fortnight. Very nice, Mehak. Simple as that. Ma'am, my sentence, Aditya ka sentence, Aditya ka sentence, Aditya ka sentence. We are facing a dry spell in North Karnataka. Very nice, Aditya. Good job. Okay. Then we have procrastination comes to me. ये मैंने पढ़ लिया. I have made a prognosis of my ex that he cheats on me. He cheats on me fortnightly in a dynamic way. Very nice, Palak. That he will. Okay. So prognosis आप future के लिए बता रहे हो है ना, तो सब चीज में will आ जाएगा. I have made a prognosis of my ex that he will cheat on me fortnightly in a dynamic way. Okay, very nice, Palak. Good job. Recently, doctor says his prognosis is good after there is no limit of my fans' happiness. So you can how famous I am. You can see how famous I am. I'm a celebrity, babe. These popular things are not my cup of tea. Ranga, good job. I'm feeling tad tired. Very nice, Mehak. Simple. The looks of Batman in the series have a dynamic change, have experienced a dynamic change, okay, or have changed dynamically. Very nice, Alpesh. Remove Tad and add Chad. I am Tad ire on my dog. Very nice, Aditya. Good job. Ire भी आपने use किया. Army killed terrorist on the fortnight. Okay. And the army killed the terrorist on a fortnight. Okay. Uh, I can't imagine why a dynamic young woman like her is marrying a shrinking, violent Violet. Okay, Violet like him. She had a better option like me, but she is a woman. Triranga, what? Don't worry, Triranga, men will definitely choose you. Ishan, the boy's mind can become dynamically engaged in the whole scenario of marriage only when a random girl smiles towards him. Very nice, Ishan. Good job. My teacher watch me and say prognosis. क्या होगा तेरा? My teacher, sorry, Ashok. Sorry, Ashok. It is something that is very, very relatable, and most of the teachers have said this in the past. My teacher watched my scores and made the prognosis that and made the prognosis कि क्या होगा तेरा. Okay. Vedika, the Britishers used prognosis used a prognosis on India and said that we won't develop or grow without them. Very nice, Vedika. There was a tad hope for Rahul Gandhi that he would not be disqualified from Lok Sabha election after his critical speech about Modi's. Very nice, Palak. Good job. Good job. Excellent sentence. Ashok, good people are very tad in the world. Good people are tad in the world. Very nice, Ashok. I give my mock fortnightly. Very nice, Aditya. Sometimes I feel tad hopeful. Very nice, Sanjana. Ma'am, there is a game named Fortnite. Oh, really, Hivan? I had no idea. What's it like? Manisha, you're diligence. Okay, Manisha, your diligence combined with your innate talent indicates a dynamic future. I wish you all the best in your college years. Very nice, Manisha. Just that your diligence combined with. Okay, very nice, Manisha. Battle Royale or Battle Royal.
The price were a tad above average, but they are of the highest quality. Very nice, Manisha. Vedika, there was a dynamic change in my mock marks, which made me be astonished, which made me astonished, okay? Or which astonished me, okay? Good job. Gaurav, there was a tad hope that she will be mine. Very nice, Gaurav. Good job. He is dynamic in the loose and we expect big things of him. He is dynamic in the loose. Didn't understand that, Lucky. I am tad sleepy. Very nice, Ashani. I am tad sad to see my marks in mock. Very nice, Chandan. The aerodynamic of the new Bugatti Chiron was awesome. Very nice one. There there is a dynamic change in my English learning because of you, ma'am. Thanks. Good job, Sakshi. I'm so glad. All right, so बढ़ते हैं हम अपने important announcement की तरफ. But before that, let me just quickly tell you what are the words that we have discussed. Cyclical, diminish, retain, bountiful, dry spell, incessant, downpour, peculiarity, spatially, deficit, fortnightly, prognosis, dynamic, and tad. All right, so the price has dropped, and this is the last 12 hours. Last 12 hours, boys and girls, to save up to 50% off. And if you use my code, आपको flat 20% तो off मिलेगा ही मिलेगा. But because of the price drop, you are saving up to 50%, जिसके साथ आपको एक महीने का extension भी मिलेगा. Extension as in एक महीने आपको free में मिलेगा. So use my code Vaishnavi10 for that. So last 12 hours, boys and girls, last 12 hours. So this is the ऐसे आप सेव करेंगे अप टू 50% ऑफ, क्योंकि इसमें आपको 6 months प्लस 1 month एक्सटेंशन मिल रहा है. प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है कि प्लस बैचेस, plus and iconic, what is the difference? That plus may you get classes only, and iconic may you get classes plus a mentor who guides you, and then you also get books. Okay, so that is the difference between plus and iconic. So you can subscribe to either of it and you will get a discount. You're saving a lot of money, a ton of money. Okay, not a tad of money, but a ton of money. So make sure that you use my code Vaishnavi10 for it. अब CLAT के 10 sectional mocks or 10 full length 10 sectional mocks and 10 full length mocks is available. अब सबके साथ मिलेगा, सारे आइकॉनिक बैचेस के साथ मिलेगा, और 9 month एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन वाले बैचेस के साथ ये अवेलेबल हो जाएगा. एंड द डिलीवरी विल स्टार्ट इन जून. ओके, सो इट विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर डोरस्टेप. So these are the batches that you can subscribe where I am taking classes, where you have level up batch जो एक foundational batch है, CLAT, AILET, MHCET, LSAT और SLAT 2024 के लिए. I am taking English language in this batch, so if you want to get flat 20% off and up to 50% off, then you can use my code Vaishnavi10 to subscribe or enroll yourself in this batch. Or if you don't want that batch, then you can enroll yourself in this batch. The Warriors is a batch for CLAT 2024 aspirants. Again, I'm taking English language in this batch, and all your favorite educators are also here, and they are here as well. So choose the batch depending on all your favorite educators, and you can use my code Vaishnavi10 to enroll. All right, crack CUET PG Law DULLB in 30 days is an intensive course for DULLB, और ये 27th April से start हो गया है, so make sure that you enroll. All right, highlighters out, everyone. Highlighters out, everyone. Highlighters out. So this is the title of the passage, Uncertain Showers. Okay, Uncertain Showers is the title, and it is definitely talking about rain, not the bathroom shower. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द मेन आइडिया. सब कोई रेडी है? इज एवरीवन रेडी? इज एवरीवन रेडी? It is very difficult for me to give an accurate prognosis. Very nice, Lucky. Good job. गद्दारी कर बे. What did I do? ओमनी वैन कहाँ है मेरी? Okay, are you ready? Yes, Vedika is saying yes. Okay.
So let's get started. Farmers needs to be given timely accurate information on rainfall. तो ये ऑथर का कंक्लूजन है, इस पूरे एडिटोरियल का कंक्लूजन क्या है कि फार्मर्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. ओके, सो दिस बिकम्स द कंक्लूजन ऑफ द इंटायर editorial. Okay, so the Indian meteorological department, meteorology क्या चीज को measure करता है? It measures the weather conditions, right? So IMD earlier this week updated its monsoon outlook from April. Okay, तो earlier this week उन्होंने क्या किया? Monsoon का कैसा दिखने वाला है? Monsoon उन्होंने release किया data. Okay, और अप्रैल एंड में रिलीज किया. ओके, सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि आईएमडी का ये जो मीटियोलॉजिकल डेटा उन्होंने रिलीज किया है उसके बारे में बात करेगा ऑथर. तो क्या बात करेगा? द लेटेस्ट एनालिसिस फ्रॉम द वेदर मॉडल दैट द आईएमडी रिलाइज ऑन सजेस्ट नियर सर्टेनली of the development of an El Nino, a cyclic phenomena of warming in the Pacific. Okay, this becomes the extra information. यहाँ से पूरा extra information है. तो ये जो latest report है इस सॉरी ओके, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इससे क्या पता चल रहा है कि क्या सजेस्ट कर रहा है? ये जो आईएमडी का डेटा जिस पे रिलाई करता है आईएमडी, वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि डेफिनेटली एक एलनीनो आने वाला है. अब एलनीनो अगर आपको नहीं पता है, हमने 2 क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो यहाँ तक आपको रिमेंबर दैट पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है वो काफी होता है क्वेश्चन आंसर करने के लिए, राइट? सो इवन इफ यू आर रीडिंग दिस पैसेज फॉर द एडिटोरियल फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या है एल नीनो. ओके, सो अ साइक्लिक फिनोमेना ऑफ वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक that 6 in 10 years is linked to diminished rainfall in the west, northwest and western part of central India, especially July एंड अगस्त. तो ये है एल नीनो. ओके, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो एक साइक्लिक फिनोमिना है ऑफ वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक. सेंट्रल पैसिफिक में क्या हो जाता है? वार्मिंग हो जाता है किसका? विंड का, राइट? सो वार्म हो जाता है और ये that 6 in 10 years is linked to, और 6 साल out of the 10 years, out of 10, 6 years ये किससे रिलेटेड किया जाता है? इसको किससे रिलेट किया जाता है? रेनफॉल की कमी होने लगती है वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल इंडिया में, स्पेशली किस से किस मंथ तक? जुलाई से अगस्त से मंथ तक. तो आपको समझ में आ जा रहा है यहाँ तक कि ऑथर का कंसर्न क्या है. ओके, तो एल नीनो आने वाला है. ये आईएमडी जिस डेटा पे रिलाई करती है उस मॉडल के हिसाब से एक एल नीनो आने वाला है और वो इतना अफेक्ट करेगा इंडिया को और इससे इस मंथ के बीच में अफेक्ट करेगा. ओके, नाउ However, despite the certainty of an El Nino, the IMD has chosen to retain its outlook of a normal monsoon at 96 of the 50-year long-term average of 87 centimeters. तो ऑथर क्या बोल रहा है? ये होने के बावजूद, ये डेटा इनके पास होने के बावजूद, क्या एल नीनो के आने के बावजूद, की आशंका होने के बावजूद, आईएमडी ने क्या किया है? चूज किया है कि वो अपना आउटलुक कैसा रखेंगे? वो नॉर्मल बताएंगे मॉनसून को. ओके, कि नॉर्मल मॉनसून होगा और 96% ऑफ द 50-year ओल्ड लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर्स. तो यही नॉर्मल इसको कहते हैं. ओके, दिस इज कंसिडर्ड नॉर्मल. ये रेनफॉल एक्सपेक्टेशन है और ये नॉर्मल आउटलुक बोल दिया है आईएमडी ने. यही प्रॉब्लम है. ओके, सो यहां से यहां तक पता चल जाता है हमें कि ऑथर को प्रॉब्लम क्या है या कंसर्न क्या है. ओके, व्हाट इज द ऑथर्स कंसर्न? अब anything below 96 would have been categorized as below normal, और 96% से कुछ भी कम होगा तो उसको बिलो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, अंडरलाइन दिस असेसमेंट. अब ऑथर बोल रहा है कि ये जो असेसमेंट है इसके अंदर का फैक्टर क्या है? its assessment is a calculation that another phenomena called the Indian Ocean. तो क्यों बोल रहे हैं आईएमडी कि नॉर्मल होगा? जब एल नीनो आने वाला है तब आईएमडी क्यों चूज कर रहा है टू से दैट द वेदर विल रिमेन नॉर्मल, नॉर्मल रेनफॉल होगा? क्यों? क्योंकि अंडरलाइंग दिस असेसमेंट, मतलब ये जो असेसमेंट उन्होंने किया है उसके कैलकुलेशन के पीछे और एक फिनोमिना है. एक फिनोमिनन क्या हो गया? एल नीनो हो गया. अनदर फिनोमिनन क्या हो गया? इंडियन ओशन डायपोल. ओके, दिस इज अनदर फिनोमिनन
अब इसके बारे में भी देखो, जैसे एल नीनो के बारे में दिया हुआ है कि अ साइक्लिक फिनोमेना ऑफ वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक, इसके बारे में भी दिया हुआ है टेम्परेचर स्विंग बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये पार्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये आईओडी क्या होता है। ओके, सो रिमेंबर डैश के बीच का इन्फॉर्मेशन, अगर आपने पंक्चुएशन वाले क्लास किए हैं मेरे, तो आपको पता रहेगा कि ये जो डैश के बीच का इन्फॉर्मेशन रहता है इज ऑलवेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, सो you can choose to skip it if you know, or you don't have to really read it carefully, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये जो आईओडी आएगा, ये दिस वुड फेवर रेन डेवलपमेंट एंड ऑफसेट द लॉस इन रेन फ्रॉम एन एल नीनो। तो इसके वजह से क्या होगा कि रेन का लॉस होगा, ठीक है, सॉरी, इट विल ब्रिंग इन रेन, जो लॉस होगा एल नीनो की वजह से, जो ड्राई स्पेल होगा एल नीनो की वजह से, वो लॉस कौन रिकवर करेगा? आईओडी। ओके, आईओडी की वजह से हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, वुड फेवर रेन, इन इसकी वजह से रेन होगा, और एल नीनो की वजह से जो रेन लॉस होगा वो ये कॉम्पेंसेट कर देगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि नॉर्मल रहेगा इस साल का रेनफॉल एक्सपेक्टेशन। It is important to note that IOD, it is important to note that IOD are not as strongly linked to the bountiful rains as the El Nino is to depressed rain। तो मतलब ऑथर क्या एनालॉजी निकाल रहा है, कंपैरिजन निकाल रहा है, कि ये ऑथर का ओपिनियन है, ये बहुत जरूरी है नोट करना। ऑथर कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि आईओडी जितना स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्गली रेनफॉल नहीं लाता है जितना एल नीनो रेनफॉल को सप्रेस करता है। रेनफॉल जितना नहीं आता है एल नीनो की वजह से, उतना स्ट्रॉन्गली आईओडी रेन नहीं लाता है। ओके, सो बेसिकली दिस कैन नॉट कॉम्पनसेट, ये एल नीनो का इफेक्ट कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा आईओडी की वजह से, ये पॉइंट आउट कर रहा है ऑथर। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का एक क्लेम बनाया ऑथर ने, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि इन 1997 इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एल नीनो बट रिसीव्ड ओनली 2% एक्सेस रेन बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव आईओडी। तो 1997 का डेटा लेके ऑथर इसको सब्सटैंशिएट करने की कोशिश कर रहा है, या एविडेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है कि 1997 में इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया था, एल नीनो आया था, और उसी टाइम आईओडी भी आया था, लेकिन आईओडी की वजह से 2% बस एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ। ओके, बस 2% एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ। हाउएवर, लेकिन यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, बोथ हैव नॉट अपीयर्ड एट द सेम टाइम सिंस दैट ईयर। और उसके बाद दोनों फिनोमिनन एक साथ कभी नहीं, फिनोमिना, दोनों फिनोमिना एक साथ कभी अपीयर नहीं किए। रिमेंबर, फिनोमिनन इज द सिंगुलर फॉर्म एंड फिनोमिना इज द प्लूरल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं दोनों फिनोमिना क्या एक साथ उस साल के बाद, 1997 के बाद एक साथ कभी नहीं आए हैं अंटिल नाउ। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस देन the both factor are expected to play out in the same monsoon season। और उसके बाद ये पहली बार होगा कि मॉनसून सीजन में दोनों फैक्टर्स साथ में अपना काम कर रहे होंगे। ओके, दे विल प्ले आउट टुगेदर। ओके, सो years India last reported a greater than 10% deficit in monsoon rainfall were 2014 and 15, both El Nino years। Okay, अब ऑथर इसके बारे में भी बता रहा है कि हालांकि 1997 में 2% एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ था आईओडी का इफेक्ट की वजह से, लेकिन उसके बाद तो आईओडी आया ही नहीं, दोनों साथ में कभी आया ही नहीं। और 2014 और 15 में एल नीनो बस आया था, उसकी वजह से ड्राई स्पेल हो गया था, 10% डेफिसिट हो गया था मॉनसून का। ओके, सो द ऑथर इज क्लियरली ट्राइंग टू पॉइंट आउट व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, एंटिसिपेशन सही नहीं है इनका। ओके, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, और फार्मर्स इससे बहुत इफेक्ट होंगे। ओके, सो इफेक्ट कैसे होंगे उसके ऊपर ऑथर जा रहा है। ओके, स्लोली एंड स्टेडीली द ऑथर इज गोइंग टूवर्ड्स इट। The IMD update also underlines that rain-fed agriculture zones of the country would be between 92 to 104% of the average। तो जितने भी रेन-फेड एग्रीकल्चरल जोन्स हैं, मतलब जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और एग्रीकल्चरल जोन ऐसे जोन जहां पर बारिश होती है, उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर होता है। ओके, सो आईएमडी के हिसाब से ये अंडरलाइन कर रहे हैं ये फैक्टर कि रेन फेड एग्रीकल्चर जोन में कंट्री का ऐसे ऐसे जोन्स जैसे चेरापूंजी हो गया, यू कैन टेक places like
बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल जहां होता है, यू कैन टेक रेनफॉल के सीजन में जहां पर हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस होता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, ऑल दीज सेक्टर्स, वेस्ट ईस्ट दोनों सेक्टर में एक्सपीरियंस होता है, एंड साउथ में भी सर्टेन प्लेसेस, देर आर सर्टेन प्लेसेस जहां हैवी रेनफॉल होता है, सो दे आर रेन फेड, जैसे केरला हो गया। सो रेन फेड एग्रीकल्चरल जोन्स ऑफ कंट्री, उनको कितना परसेंट मिलेगा? 92 से 104% तक एवरेज माना जा रहा है कि वहां पर रेनफॉल होगा, 92% से लेके 104 तक। while this टेक्निकली क्वालिफाइज एज नॉर्मल, तो ऑथर क्या बोल रहा है? टेक्निकली तो देखा जाए कि 92% से 104% तक आ रहा है, तो ये नॉर्मल क्वालिफाई करेगा, राइट? इट इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज वेरिएशन एंड कुड मीन लॉन्ग ड्राई स्पेल्स फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ incessant downpour। तो टेक्निकली इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है, 92 से 104 के बीच का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत वेरिएशंस देखने को मिलेगा, राइट? वैरायटी मिलेगा देखने को। किस चीज के बेसिस पे? कि कभी एकदम ड्राई स्पेल हो जाएगा और उसके बाद बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो इट इज, इवन दो इट इज नॉर्मल बट कंसिडर्ड नॉर्मल, लेकिन ये फार्मर्स के लिए तो सही नहीं होगा, राइट? एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होगा, राइट? सो दिस माइट हेल्प मीट द रीजन्स रेनफॉल नंबर। तो रेनफॉल का नंबर तो मीट हो जाएगा, लेकिन हेल्पफुल नहीं होगा एग्रीकल्चर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑथर इससे ड्रॉ किया है कि ये वाला जो चीज है, ये हेल्पफुल भले हो जाएगा, लेकिन नंबर जस्टिफाई कर देगा, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। While every monsoon has its own peculiarities, whatever the model might say, it would be crucial to watch out for monsoon's distribution, both spatially and temporally. ऑथर बोल रहा है कि लेकिन हर मॉनसून अलग होता है, उनका हर एक मॉनसून का एक और अलग सा एक मॉडल होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखने में कि मॉनसून का इस बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, बोथ स्पेशली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब स्पेशली एज इन ड्राई स्पेल होके फिर इंसेसेंट डाउनपोर्स हो रहे हैं, या थोड़े टाइम के लिए बस डाउनपोर हो रहा है। तो टेम्परली और स्पेशली दोनों देखने को के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा इस बार का मॉनसून। Sharp deficit during July or August, particularly in central India, are likely to influence agricultural outputs। और इसके वजह से ये जो शार्प डेफिसिट होगा रेनफॉल का जुलाई और अगस्त में, कहाँ? सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश वाले रीजन में अगर शार्प डेफिसिट होगा तो उसका इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चरल आउटपुट पे कैसा होगा, ये भी देखना ये उसके वजह से आउटपुट पे, एग्रीकल्चरल आउटपुट पे impact padega, right? More accurate assessment of daily of rain during this month are available through the IMD's extended range forecast that give a fortnightly prognosis। तो और accurate अगर आपको information चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये तो basically ये line आपको, this is not very important, ठीक है? prognosis अब and these can be quite dynamic। So basically author क्या बोल रहा है कि ये dynamic है ये reports। okay, so the monsoon is forecast to reach Kerala by June 4th, and whether it sticks to this date or arrives a tad early or late has little bearing on the quantity of rain during the core monsoon month। तो ऑथर बोल रहा है कि मॉनसून फोरकास्ट के हिसाब से केरला में जून 4th तक रेनफॉल आने लगेगा, लेकिन ये उससे पहले आए या उसके थोड़े दिन बाद आए, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मॉनसून कैसा रहेगा पूरे मंथ में, या जून 4th के पहले आ जाएगा या बाद में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोर मॉनसून मंथ पे, ठीक है? कि कितना क्वांटिटी ऑफ रेन हो रहा है उस पे नहीं। सो दिस ईयर स्टेट एंड द सेंटर मस्ट डबल, क्या करना चाहिए? स्टेट और सेंटर को डबल करना चाहिए अपना एफर्ट टू कन्वे एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स। तो स्टेट और सेंटर दोनों को टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपने फार्मर्स को देना चाहिए इस साल, यूजिंग ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन चैनल्स डाउन टू द ब्लॉक लेवल। ओके, तो इनको पूरा एक एक चीज बताना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए फार्मर्स को, बोथ सेंटर एंड स्टेट, उनको सब कुछ डाउन टू द ब्लॉक लेवल, मतलब वेरी स्मॉल चेंजेस ऑल्सो इन द वेदर रिपोर्ट, डेली वेदर रिपोर्ट में भी थोड़ा सा भी चेंजेस है वो भी बताना चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास तो प्रोग्नोसिस है, इनके पास तो एक्सटेंडेड रेंज ऑफ फोरकास्ट भी है, तो दे शुड बी गिविंग इट आउट। बोथ सेंटर एंड स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है ऑथर कि इन दोनों को करना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स
नहीं, गौरव आज नहीं गा रहे हैं, और होपफुली लेट्स सी आफ्टर द आफ्टर दिस इज ओवर प्रोबेबली. सो दिस वाज द एडिटोरियल, और अब हम देखते हैं मेघालय, राजस्थान. राजस्थान, आर यू सीरियस? Gujarat, Rajasthan. Yes, Rajasthan also experiences rainfall. You know what has been happening? Jodhpur was never prepared to receive that much of rainfall. Abhi kuch years se, even the west, Rajasthan, maybe they are experiencing heavy rainfall. And because while Jodhpur was being constructed, वो city का planning इस हिसाब से किया गया था कि rainfall बहुत कम experience करेगा. And now every rainy season it gets clogged, and the water is all over the street because there is no drainage system in Jodhpur. So yes, it does experience rainfall and heavy rainfall. Yes, Gaurav, मैं थी जोधपुर. Yes. All right. So what would be the tone of today's editorial? Ria is saying concerned and suggestive. Mm, हाँ, cautionary तो yes, cautionary. Yes, cautionary तो मान के चलते हैं. ठीक है, cautionary definitely. Right. Absolutely. You guys are doing well. Very nice. तो कॉशनरी हो गया. नाउ रिमेंबर, कॉशनरी एंड कॉस्टिक आर नॉट सेम. कॉस्टिक का मतलब एंग्री होता है, ठीक है, बिटर होता है. एंग्री बिटर होता है, ठीक है, कॉस्टिक. बट कॉशनरी इज वेयर ऑथर इज टेलिंग अ कॉशनरी टेल, मतलब सावधानी बरतने की जरूरत है. ओके, सो कॉशनरी. एंड द ऑथर इज ऑल्सो बीइंग सजेस्टिव. ओके, सो सजेस्टिव एंड कॉशनरी. ओके, एंड दी ऑथर इज ऑल्सो स्केप्टिकल. अगर देखो कि रेनफॉल, दी ऑथर इज सेइंग कि जैसा उन्होंने सजेस्ट किया है, तो स्केप्टिकल भी हो सकता है. ओके, सो ऑल दीज टोन्स कैन बी द केस. ओके, सजेस्टिव हो सकता है, कॉशनरी हो सकता है, और स्केप्टिकल हो सकता है. ओके, स्केप्टिकल भी हो सकता है. द ऑथर इज बीइंग स्केप्टिकल ऑफ आईएमडीज डेटा. राइट, आईएमडी का जो डेटा है उसके ऊपर ऑथर क्वेश्चन कर रहा है कि ये इन्होंने ऐसा तो कह दिया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, यहाँ पर ये चीज फैक्टर्स भी होते हैं, तो ये उन्होंने कंसिडर किया कि नहीं किया, ये कह नहीं सकते. ओके, तो बेसिकली कि एक्यूरेट कितना है, उससे रेनफॉल कितना होगा, इससे नहीं कह सकते. ओके, सो द ऑथर इज बीइंग स्केप्टिकल, या द ऑथर इज आल्सो बीइंग concerned, perturbed. I think these three are more than enough. Okay, cautionary, suggestive. Suggestive thoda sa kam, because conclusion, second paragraph mein we can say the author is being suggestive. End of conclusion is suggestive. Okay, लेकिन mostly passage में author क्या बोल रहा है, caution बरतने को कह रहा है, और skeptical भी है कि ये जो data है वो सही data है कि नहीं, वो accurate data नहीं है, उससे ज्यादा कुछ होगा कि नहीं होगा. ओके, सो या तो skeptical या तो आप cynical भी कह सकते हो. ओके, इन दिस केस यू कैन ऑल्सो कॉल इट सिनिकल. ओके, सिनिकल भी कह सकते हो, क्योंकि ऑथर कह रहा है कि ये जो प्रिडिक्ट किया है, इससे तो काम नहीं बनेगा. ओके, इससे तो इतने ऐसे प्रिडिक्शन से हम ये नहीं एंटिसिपेट कर सकते कि ऐसा ही होगा. ओके, सो द ऑथर इज बीइंग सिनिकल कि जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया नॉर्मल, नॉर्मल की तो आशंका बहुत कम लग रही. ओके, सो दैट इज द editorial. Do I have deja vu, or have you already seen a similar type of editorial before? I think that is what is deja vu, Ishant. You are saying the same thing before or and after or as well. So that exactly is deja vu. So you are having a deja vu. We have seen an article like this. Yes, editorial एक और El Nino के ऊपर था, and we have seen a editorial like this, how it is going to affect India's weather report.
So good job, everyone, and good job, Ishant. All right. Bye bye, everyone. Thank you so much for attending today's editorial, and I will see you only the plus students. And which plus students? I'm talking about ACE Legal for a 4 p.m. session. All right. That's it for today. Thank you. Bye bye. Tata. Bye, Shant. Bye, Alpesh. Bye, Trivanga. Au revoir, everyone. You're welcome, Kinkini. Decor. Sakshi, bye. Bye, Manisha. Bye. Bye, everyone.